Students, today we are going to see helium neon gas laser. Very important. हम तुम्हारे syllabus में gas laser के बारे में है. So first we will see helium neon gas laser. First we will draw the diagram of this. इसको इरेज कर लेना यहाँ पे भी just like this. This is discharge electrodes. ये जो है this one and this one is the discharge electron. इसके अंदर अभी हम मिरर्स लगाएंगे. हमें मिरर्स की प्रॉपर्टी पता है. वन इज़ फुल्ली सिल्वर्ड एंड सेकेंड इज partially silvered. So these are two mirrors. This is fully silvered reflecting end plate. यहाँ पे partially silvered reflecting end plate. पार्शली है, फुल्ली है. जहाँ पार्शली है वहाँ मैंने तुम्हें ऑलरेडी सिखा दिया. यहाँ से बनेंगे लेज़र. सो दिस इज लेज़र बीम विल कम आउट फ्रॉम हियर. इसके अंदर mixture of He, helium and neon gases are there. यहाँ पे He and Ne. एंड अब ये जो है दिस इज़ ए नैरो डिस्चार्ज ट्यूब. इसका जो डायमीटर रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर. इमेजिन कर सकते हैं या फिर तुम तुम्हारे स्केल में देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर कितना मोटा होता है. और इसकी जो लेंथ है, दिस लेंथ जो रहेगा इट इज़ अबाउट 80 सेंटीमीटर लॉन्ग. 80 सेंटीमीटर लंबा होगा और इसका जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर रहेगा. एंड इसके अंदर जो हीलियम एंड नियोन का जो रेशियो है, हीलियम एंड नियोन जो रेशियो है, 10 पार्ट्स ऑफ हीलियम यूज़ होगा. हीलियम यूज़ होता है 10 पार्ट, तो 1 पार्ट ऑफ नियोन यूज़ होगा. वेरी इंपॉर्टेंट, 10:1 का रेशियो है. एंड एट ए लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर है, PRES प्रेशर जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ 1 टॉर प्रेशर के प्रेशर जब यूज़ होता है देन यू विल गेट लेज़र बीम. सो वेरी इंपॉर्टेंट, this is all about the setup of laser, HENE gas laser setup. And this is helium and neon gas we are going to make use, and the mixture which is of the ratio of 10:1. 10 part of helium and 1 part of neon, they are filled in this and they will act as active medium. And on the one side one mirror is there and the another side again one mirror is there, upon which nodes will be formed for the standing wave. One is partially silvered and second is fully silvered. Fully silvered, this is fully reflecting, where this has the partially reflecting surfaces. From the partially reflecting surface, when the beam will achieve enough energy, it will come out and laser beam will be produced. The helium का जो symbol है that is He, and neon का जो है N capital small e. Gas laser was the first gas laser fabricated by Ali J and his co-workers in Bell Telephone Laboratories in USA in 1961. तो ये अली
साइंटिस्ट अली and his co-workers सब मिलके बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज में it was generated in 1961 in USA. This is gas laser as shown in the figure. The helium-neon laser consists of a long narrow discharge tube. अब हम डायमीटर लिख लेते हैं बिकॉज इन एग्जामिनेशन दिस आर नीडेड. ऑफ diameter of about 1 centimeter and about 80 centimeter long. It is filled with a mixture of about 10 parts of helium and 1 part of neon at a low pressure of the order of 1 torr. The gas mixture of helium and neon forms the lasing medium, and this mixture is enclosed between a set of parallel mirrors forming a resonant cavity. One of the mirror is completely reflecting and the other mirror is partly transparent, which allows amplified laser beam to leave the tube. The spacing between the mirrors is equal to. अब स्पेसिंग भी हमें बताना पड़ेगा मिरर के बीच में. हमने ऑलरेडी बोला था स्पेसिंग बिटवीन द मिरर इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ half the wave length of laser light. That is the condition for standing wave to generate an electric discharge is produced. अभी हम क्या करेंगे, हमने वहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रोड्स बताए थे वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, एक फ्लैश ऑफ लाइट वहाँ से जनरेट होगा. इज produced in the gas by means of electrodes outside the tube
connected to a source of high frequency AC voltage. The electrons emitted during the discharge are responsible for the necessary pumping action. So in short, what are the things needed for generation of any laser is atoms होने चाहिए, then pumping active medium होना चाहिए, then active medium के बाद optical resonant cavity होनी चाहिए, population inversion achieve होगा, then only we will get the laser beam. And now we will see what is the working of how this HENE gas system works. वर्किंग समझने के लिए फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द एनर्जी लेवल डायग्राम. तो हमने पहले देख लिया था देर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल. वन इज 3 लेवल एनर्जी लेवल डायग्राम एंड सेकंड इज 4 लेवल एनर्जी लेवल डायग्राम. तो फर्स्ट हम HENE के लिए लेवल डायग्राम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द हाउ इट वर्क्स. और KING. सो दिस इज वर्किंग. टिल नाउ हमने कंस्ट्रक्शन देखा था, कंस्ट्रक्शन ऑफ HENE गैस लेज़र. नाउ वी विल सी द वर्किंग. फॉर दैट हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करेंगे. सो दिस इज ग्राउंड स्टेट एज यूजुअल मैंने जो बोला है. दिस इज हीलियम पे पहले ये होगा हीलियम 1. दिस इज 1 एक्साइटेड स्टेट. दिस इज द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. इसके पास 2 एक्साइटेड स्टेट है, He2, He3. This is energy. Now what happened? अब एटम ऑफ हीलियम कहाँ पे है? ग्राउंड स्टेट में है. जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब से जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहा है हाई फ्रीक्वेंसी, जो डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड्स में इज कनेक्टेड टू द हाई फ्रीक्वेंसी AC वोल्टेज. जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज ट्यूब से इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे. इलेक्ट्रॉन्स दिस एटम से कोलाइड करेगा. इट विल गिव इट्स एनर्जी. एज अ रिजल्ट एटम्स ऑफ हीलियम जो ग्राउंड स्टेट में है या ग्राउंड स्टेट में है, इट विल गो टू द एक्साइटेड स्टेट. अब हीलियम के पास एनर्जीज आ गई है, वो क्या करेगा? इन रिटर्न इट विल कोलाइड विथ, कोलिजन होगा नियॉन एटम्स के साथ. यहाँ पे हम लिखते हैं एक्साइटेशन बाय कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोलिजन हुआ. यहाँ पे एटम्स एनर्जी गेन किया. हीलियम के एटम्स अभी एक्साइटेड स्टेट में. दिस हीलियम एटम्स इन रिटर्न विल कोलाइड विथ नियॉन एटम. अब नियॉन को तो ये डायरेक्टली अपनी एनर्जी पूरा ट्रांसफ़र कर रहा है. तो वी विल, यहाँ पे इसका एक एनर्जी रहेगा, यहाँ पे एक एनर्जी रहेगा एज यूजुअल, पर यहाँ पे एक और दिस इज एंड यहाँ पे 2 एनर्जी लेवल्स रहेंगे. So this is ground state of neon. अब लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब नियॉन आ गया एक्साइटेड स्टेट में है. कुछ नियॉन यहाँ पे, यहाँ की एनर्जी यहाँ डायरेक्ट ट्रांसफ़र है तो यहाँ आ गया नियॉन यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे, नॉन रेडिएटिव ट्रांसफ़र होगा. एंड यहाँ पे 3.39 माइक्रोमीटर जो लाइट है, फोटोन एनर्जी विल बी लिबरेटेड, नॉन रेडिएटिव, वेरी स्मॉल एनर्जी. वेरएज यहाँ जब आया यहाँ से यहाँ भी आएगा. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सम ऑफ द एटम्स यहाँ रहेंगे तो ये यहाँ से यहाँ आएगा. एंड यहाँ आने के बाद दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ से यहाँ जो ट्रांजिशन है, दिस इज फ्रॉम ये दिस इज Ne1, Ne2, दिस इज Ne3, Ne4, Ne5, Ne6. तो Ne3 से Ne2 जो ट्रांजिशन रहेगा वो स्पॉन्टेनियस भी
स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, एमिशन। और यहाँ से Ni2 से Ni1 जो रहेगा वो डी एक्साइटेशन बाय कोलिजन। एट द सेम टाइम दिस इज नॉन रेडिएटिव, यहाँ से कोई रेडिएशन नहीं, नॉन रेडिएटिव, यहाँ थोड़ा सा रेडिएशन निकल रहा है। अब जो लेज़र बनेगा यहाँ पे होगा पॉपुलेशन इन्वर्जन विल हैपन। जैसे ही पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, दिस इज Ne5, दिस इज Ne5 लेवल, दिस इज मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट से इंटरमीडिएट स्टेट में एटम्स विल एवलांच, कोहेरेंट फोटोन्स विल बी गिवन आउट। यहाँ पे लेज़र बीम बनेगा ऑफ वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट, लेज़र कहाँ बनेगा? इन दोनों के बीच में बनेगा एंड लेज़र विल बी गिवन आउट Hν लेज़र। सो कहाँ बन रहा है? दिस इज द मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट से जब एटम जंप करेगा इंटरमीडिएट स्टेट बाय लिबरेटिंग कोहेरेंट फोटोन्स, यहाँ एवलांच ऑफ फोटोन्स आर टेकिंग प्लेस एंड हेंस लेजर बीम इज गिवन आउट विच इज हैविंग वेवलेंथ ऑफ 6328 एंगस्ट्रॉम डिग्री। एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसा ही फिगर बनाना है। दिस are in same line, these two are in same line, whereas the ground state are also in the same line. In between 1, 2 and 3 levels you need to show. The important is helium first ground state में है. Now there is a question, why only helium, why not neon? The reason is हमने helium and neon का जो ratio लिया है, helium and neon का they are 10:1. सो मेजॉरिटी जो एटम रहेंगे वो हीलियम के रहेंगे, माइनॉरिटी में Ne के एटम्स रहेंगे. सो फर्स्ट जब इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब से जब इलेक्ट्रॉन लिबरेट होगा तो फर्स्ट इट विल गिव इट्स एनर्जी टू द हीलियम एटम विच इज इन द ग्राउंड स्टेट. इट विल गो टू द एक्साइटेड स्टेट. फॉर हीलियम 2 excited states are available, He2 and He3, and simultaneously it will collide with any neon atoms and it will give all the energy which it gained from the electron, transfer its energy to the neon atom. As a result, the neon atom will gain all that energy and it is now in the excited state. So after that from Ne6 it will transact, some of them will transact to Ne5 and some of it will transact directly to Ne3. There is no rule. So as soon as Ne5 the number of atoms are more as compared to the ground state, that means the population inversion is achieved. Population inversion Pi is achieved. As soon as population inversion is achieved, first of the atom will come from Ne5, jump from Ne5 to Ne3 and it will give out one photon. That one photon will stimulate the other atoms which is present in the metastable state to come down to Ne3 and in this process avalanche will happen. Avalanche means मैंने already बोला था जब स्नो गिरता है पहाड़ से तो बहुत सारा स्नो एकदम टूट पड़ता है. देयर इज नो रूल. वो जो गिरता है उसको हम avalanche बोलते हैं. तो यहाँ पे avalanche of photons will happen and all the atoms will come down to Ne3 by liberating the excess photons. And laser is obtained between these two states, that is Ne5 and Ne3 of wavelength 6328. From Ne3 to Ne2 spontaneous emission will take place and from Ne2 to Ne1 non-radiative de-excitation by collision will take place and ultimately the neon atom will come down to the ground state. This is all about the working of He-Ne gas laser. So we will quickly write, this is the energy level. Energy level diagram showing energy levels of helium and neon atoms and showing various transitions. Quickly we will write the complete process of production of laser beam is I already described, is already described. First is initially
both neon and helium atoms are in their ground states. Now, when a discharge is passed through the gas, the accelerated electrons collide with the helium atoms and excite them to higher energy levels marked by He2 and He3, which I already shown you and explained. Both these levels are metastable and hence excited helium atoms are retained in them for fairly long intervals of time. Both these levels are metastable and hence excited helium atoms are retained in them for fairly long intervals of time. Point 2. Now, these excited helium atoms then collide with neon atoms and excite them to the energy levels marked by Ne4 and Ne6, thereby de-exciting helium atoms to ground state. Dear students, you can use your language, but the meaning should not change. So if your English is good enough, then the way I explained you that enough, you can write in your own words. In other words, the excited helium atoms transfer their energy to the neon atoms through a collision process. Thus, in this mechanism, electrons pump helium atoms and helium atom pump the neon atoms. But it is important to note that the
energy levels Ne4 and Ne6 of neon have the same energies as that of He2 and He3 of helium. Third point. Thus, the discharge through the gas mixture continuously populates the neon populates the neon excited level, which is denoted by excited energy levels, which is denoted by Ne4 and Ne6. This helps to create a state of population inversion between the levels Ne4 and Ne6 and the lower lying Ne5 and Ne3 levels. 4. Figure shows the energy level diagram giving various transition which lead to the emission of wavelengths 3.39 micrometer, 1.15 micrometer and 6328 Armstrong degree. This is where the laser is formed. The laser wavelength is 6328 Armstrong, which is monochromatic in nature. The transition from Ne6 to Ne3 gives a radiation 6328 Armstrong degree, which is well known red light from HENE gas laser. Finally, the neon atom then drops to the lower level marked by Ne2 by spontaneous emission. From this level, it then comes to the ground state, losing energy due to
collision with the walls of the discharge tube, and this is non-radiative transition. In the examination, dear students, you need not to follow what I wrote. Whatever I explained, if you understood, you can write in your own language, provided the meaning should not change. Thank you.